I like every picture because the first time I saw the locales and the song, you know, हमारे वक्त में गाने में हम निकल जाते थे, ऐसा विजुअल्स एंड ऐसा कहाँ से सिलेक्ट किया इन लोगों ने और कैसे पिक्चराइज किया, इट्स समथिंग सुपर। और बाकी साथ में देखिए, इमोशन तो हर इंसान की ज़िंदगी में बगैर इमोशन में कुछ नहीं। वो झूठ बोलते हैं कि उदासी नहीं आती, दुख नहीं आते, और दुख हमेशा आपको पिन पॉइंट करता है। अगर वो नहीं है, हम कितना नाचने गा लें, बात नहीं बनती। और ये कहानी इसलिए मैंने कहा घर घर की लगती है। इतना मैंने जब सुना पूरा, मैंने और जो देखा तो और भी खूबसूरत लगा। और इज़ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर, जहाँ इसको देखा था कैमरा किस पे ले जाना है तो ले जाता था। धर्म जी, also I want to know, ये आपकी फिल्म जया जी के साथ बहुत सालों बाद थी और जया जी ने अपना सफर आपके साथ शुरू किया था, और आप उनको अभी भी गुड्डी बुलाते हैं सर? गुड्डी बुलाता हूँ जी से। उनका फोटो सेशन घर पे हुआ था हमारे, और she was my fan. She used to say, she was telling me the dialogues even this. Guddi is a fine actress, and घर का आना जाना उनके साथ अभी जब भी मिलते हैं तो वो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वो गुड्डी है मेरी। और शबाना जी के साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके, उनके साथ तो it is good. I enjoyed every bit of my, जो कुछ मुझे जितना मिला मैं उसको एंजॉय किया। कोई ऐसा नहीं कि ये खामखा है। इवन अगर फुल स्टॉप है या कॉमा है या पूरा पंक्चुएशन है, बहुत सही है। एंड आई रियली एंजॉयड इट। ये बहुत रेयर होता है। ये खामखा की फुटेज क्यों, ये पासिंग क्यों है? और फिर मेरे लिए एक्टिंग रिएक्शन है। जितनी ज़ोर से कुछ जब भी डालेगा उतनी ज़ोर से आंखें बंद होती हैं। I react. दिखाओ, डेमो दिखाओ। I react to my एक जम्फी का डेमो हो जाए। Thank you. Hello, Ranveer. Chiru manner initially, when you blasted, you were too good. Thank you. How do you look at that scene, you know? I think a lot have been said about that scene, and like she said, like I was waiting that he would give me some direction, but he wouldn't even come to know that he's actually directing you. He would just come and have a conversation with you, and he just knew exactly what he wanted, and I think no director has ever trusted me so much. He knew why he's cast me, and he knew what I could do, and he just trusted me with what I could do. And that scene where I'm bursting out at everybody, I think I ate up a few lines which were there, because the first time I did it, we were both not happy with it, and I said I can be better. And the second time I did it, I ate up a few lines from the middle, and I think he said, I think it worked. And a very good message, and everybody comes, you know, all the audiences have also loved this film. Since you have married also recently, any message you would like to give for joint family and nuclear family, you know, like girls are now getting into nuclear family, you know? Any message that I would like to give through this film? I think this film says it all, and I think the what Karan said right now about the line that even Dharanji says in the film, very important time, कि घर नहीं तोड़ा जाता, रिश्ते नहीं तोड़ते। अभी इनके कैंसिल कल्चर सीन से ही ले लो, हम बहुत क्विक टू जज हो जाते हैं, समटाइम्स वी आर हार्डर इवन ऑन आवर ओन पीपल, लेकिन जो फैमिली आपकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट बनती है वो कोई नहीं बन पाता, और वो मेरी लाइफ में भी है विथ माई फैमिली एंड माई होल फैमिली, माई मदर, both my mothers, my mom and my mom-in-law, my father here, my father up there, my sisters, my brother, my husband, my friends, they are the strongest support system in my life. तो उनको ज़्यादा ग्रांटेड ना ले, और उनको ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस अगर आप दोगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी।
We did 3 more questions, right? 3 more. लक्ष्मी से डर लगता है। ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत जायज़ सवाल है। इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। मुझे लगता था कि बहुत सारे Dhanlakshmi is not allowing us to answer this question. I'm still going to go for it. I just feel that सारे जो कैरेक्टर्स थे उनका टर्न अराउंड हुआ था और लॉजिकल टर्न अराउंड था, इमोशनल टर्न अराउंड था। लेकिन जया जी यानी धनलक्ष्मी पिक्चर में कहते हैं कि इस उम्र में मेरा घमंड और मेरा अहंकार मुझे मान ही नहीं देता कि मैं गलत हो सकती हूँ, फिर भी मैं तुम्हें ये शांति का प्रस्ताव भेज रही हूँ ताकि तुम उसके साथ ना करो जो मैंने किया था। तो एक किस्म की अपॉलॉजी भी दी थी और एक किस्म का उन्होंने फिर के मैं नहीं चाहता था कि हर रिश्ते का एक टर्न अराउंड हो। लाइक आई फेल्ट दैट ऐसा नहीं होता, घरों में नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच के साथ रह जाते हैं, वो बहुत ही रिजिड होते हैं अपने थॉट्स। पूरा वहाँ से इवेंट से आते हैं और बड़ा इमोशनल सीन है वहाँ पर उनका। वहाँ से आपका एक इमोशनल स्पीच शुरू होता है। वो टर्न अराउंड कितना मुश्किल रहा आपसे, क्योंकि ये अपने आप एक हाइट पर थे, इमोशनल हाइट पे। वहाँ से वो सीन और इतना इमोशनल आउटबर्स्ट and both work wonderfully well and they're juxtaposed back to back just like that. So that's what I think is a very very special aspect of what Karan and the team created. कि एक फिल्म और ऐसे scenes जो आपको हंसते हंसते रुलाए, रोते रोते हंसाए और full wholesome viewing experience दे। आप हंसे भी, रोए भी, तालियां और सीटियां भी पीटी, और क्या चाहिए हिंदी फिल्मों में है। We did 2 more questions, right? योर सेंटर थोड़ा ये कुछ ऐसी लाइन है जो कुछ लोग महसूस भी कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत लाइन, कौन सा लाइन सर बोलिए फिर से, करण गौर से सुनिएगा। मैं ये बैक स्टोरी बोलूं? नहीं नहीं Why is he saying नहीं जरूरी नहीं है, करण समझ गया। सवाल नहीं अच्छा बाबा बोल देते हैं ये रणवीर सिंह की लाइन थी, इन्होंने लिखा था ये लाइन और वो सीन कट गया। ओहो अब अच्छा, क्या करूं? करण जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब ये फिल्म जब भी कुछ महीने बाद स्ट्रीमिंग वगैरह Amazon सिनेप्लेक्स सर, Amazon एंड सिनेप्लेक्स, तो एक्सटेंडेड वर्जन सर प्लीज। लोग डिमांड करें कि रानी का जो थीम सॉन्ग था, रानी का जो इंट्रो म्यूजिक है, आमी रानी बास बे वो वाला, और जो भी डिलीटेड सीन्स जो 3 hour 10 minutes का जो कट था ना सर, प्लीज कंसिडर। We would love to see all that and more. घर पे बैठ के वो ठीक है, लेकिन सिनेमा हॉल में थोड़ा अड़चन हो जाता है अगर मैं 3 घंटे 10 मिनट की पिक्चर रिलीज करता। रणवीर सवाल पे आते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप धर्मेंद्र सर, आप भी, करण सर, आलिया, ये कितनी फिल्मी बातें लगती है और कितना हकीकत, अपना कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें तो आपके फैंस के लिए मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा। ये लव है तो सब है, कितना जस्टिफाई होता है ये चीज़, कितनी फिल्मी बातें और कितनी हकीकत है? सर मैं क्या कहूँ, आई हैव लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ दैट इफ देयर वाज एवर अ ट्रू एंड ऑथेंटिक लाइन इन दिस मूवी और समथिंग दैट आई कुड शेयर फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड फ्रॉम लाइफ, तो यही है, सच है, सत्य वचन है। लव है तो सब है, लव है ना तो सब, बाकी सब समझे। इट इज़ the most special, precious and most magical thing that exists in our lives and universe. I believe it with all my heart. It's not just with your romantic partner, आपकी family के साथ भी, आपके friends के साथ भी, आपके colleagues के साथ भी, सबके साथ। जब love है तो सब है। Right. तो अगर लव है तो सब है, क्योंकि अगर आपके अंदर लव है तो आप खुद से खुश रहोगे। लोगों के लिए अगर आप लोगों की तरफ आप प्यार दोगे तो वो खुश रहेंगे। आपके अगर आसपास लविंग रिलेशनशिप्स है तो सब खुश रहेंगे। लव विंस ऑलवेज, सो दैट फीलिंग वो कभी चेंज नहीं होगा। और इसलिए दिस लाइन इज वेरी एप्ट। और आई टेल यू द मोमेंट वी वर डूइंग अ सीन और इम्प्रॉम्प्टू वो रॉकी से निकल गया, और जब वो रानी से बात कर रहा है, लव टू I'll tell you the situation also, वो डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग एंगल्स कि ऐसा है वैसा है, ये होगा, फिर वो कहेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है जो सिचुएशन में रॉकी और रानी है उस वक्त। और वो उसको पूछता है, तू बस मुझे एक बात बोल, तू लव करती है ना मुझे? हाँ, कहते लव है तो सब।
लव है तो we'll figure out everything else. मेन चीज वो है, लव है तो सब. एंड आई सॉरी. कैसे कैसे क्रेडिट नहीं देते सर आप कभी अरे कभी. मैं- देख रहा हूँ मैं मैंने देख रहा हूँ मैं. ठीक है कोई बात नहीं. देख रहा हूँ तेरे आपने वो जो बोला ना सर, how he finishes that scene and I stand. कैसे बोला है सर आपने? and I live by that. And I live by that. Hey, दिल को छू गया मेरे सर. Love है तो सब है and I live by that. जी. I'm very much like her. The only thing is, I think the only difference between Rani and me कि Rani थोड़ी सी जब वो प्यार भी करती है थोड़ी गुस्से से करती है, तो उसका प्यार भी गुस्सा से आता है बाहर. And मैं तो पूरी पप्पी हूँ. I love like a little puppy dog. That's my this thing. So I think that's the only difference between, not the prosperous Punjabi views, not that. That's the only difference. But otherwise, I really resonate with the person that she is, the values that she stands for, and the openness that she has to accept that she's made a mistake. That's something that I've also been brought up with. That if you've made a mistake, you have to accept it. And that's what she does in the end of the film, where she says, "I'm sorry." You know, मेरा गुस्सा थोड़ा सा एक लेवल आगे चला गया. जी. Thank you so much. I really protect that side of me, the artist, the actor, and for that I'm very grateful. It's almost miraculous that I get to be a part of this one great thing that I love, that is Hindi movies. Life में up down होते रहता है मैम, but I've always believed that the process is the prize itself. If people loved it, that's सोने पे सुहागा. I'm just extremely grateful that I get to do this for a living. I get to pursue my passion. I look back at the journey of 12 years that I've had, and I feel good. That's what I'm working towards. I'm really happy that Rocky is, another feather in the cap in filmography and an array of characters that are very dear to me. That's my super purpose in life, is to build a body of work that I can look back and be proud of. Bittu Sharma se leke Rocky Randhawa tak, it's been quite an incredible journey, and I'm only grateful for everything. I don't really understand this numbers game too much at all, and I try to remain as detached from it as possible. I really just focus on the craft, on the performance, on the character, and do my best to contribute to what is truly a collaborative effort. So if the film is a success, it's not my own, it's everybody's together, and the same goes with failure as well. So as they say, you learn more from your failures than you do from your successes, and I've learned a few things in the recent past. But at the moment, I'm just delighted at the love that's being shown towards Rocky. I'm very grateful for it. Thank you. Thank you so much. And the way he sings a song, a love song, portrays a love scene. When he says "or pass," you want to go completely pass. When he says "मैं नहीं आऊँगा," you believe him. When he says "कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी," even we don't know what he means, but we still go with the flow. Because Shah Rukh Khan is Shah Rukh Khan, and there will never be another Shah Rukh Khan. Similarly, there will never be another pairing like Shah Rukh and Kajol. But times has to bring evolution. Evolution has to bring the syntax of today. And when we represent Rocky or Rani, only in Tum Kya Mile can we take a leaf out of the glorious book of Shah Rukh Khan and Kajol and their love songs. But you have to change the tonality of love and romance to match our times today. And Rocky or Rani may be rooted characters, rooted and embedded in the heartbed of family, but they brought something new. So I don't think you can compare the two, but I do know that this is now a love story benchmark. All right, one last question, ma'am, please. Karan, this A question. few things. दोस्तों के लिए. खेला हो. Nice. अरे तालियां बिठाओ. Karan, this question is for you. Ma'am, sorry, one more second. I won't take too long. Ma'am, I've been in the halls. The reaction to the bra scene is off the charts.
especially when she says, "Chole ke piche kya hai? Chole ke piche kya hai?" And then she asks him, "Chole ke piche mein, what is it? Chole ke piche mein kya hai? हाँ?" मतलब इतने माचो इंसान का जो कचरा किया है इन्होंने। वाओ, पब्लिक ऐसे तालियां पीट रही है। मैम, you must go to the cinema halls while you're here in town and just see the reaction. Your expression at the other end. I kept looking at your insecure eyes. And so he had no clue what lingerie was. He decided to just take this trip and he said, "Card and max karenge aaj." He thought that they were going to buy some really fun designer clothes for Rocky Randhawa. So how they're noticing all these small nuances, it's pretty incredible. Huh? Yeah, but those are all. Speaking of which, ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे ही मिलने आए हैं, आप वेट कर लेंगे 2 मिनट, कुर्सी लाओ मैडम के लिए। Love your sari. Very nice color and style, babes. I like it. Thanks, Ranveer. Is it Manish Malhotra? It's Poroma. Oh, nice. So, I wanted for you to elaborate a little bit. And most certainly, जैसे what is that line? सोच नहीं, स्वाद वही. Soch nahi, swad wahi. I mean, I don't know how to assess my own work, but I have been very busy this last week, only receiving love, and it's an abundance. It's an abundance, and that feeling of joy I don't think I've ever had through my career. In fact, there's been a 7-year gap, and I've forgotten what it was like to direct a film and receive feedback. I actually do not remember what had happened during Kuch Kuch Hota Hai, because we had a situation that made us, leave the country for a month. So I wasn't there when the film released. And Kabhi Khushi Kabhi Gum came in the year of Lagan and Dil Chahta Hai. So I was like, oh God, we may have done the numbers, we didn't get that love, we got it in retrospect. But it was all about Lagan and Dil Chahta Hai. Lagan was this archival beauty, and Dil Chahta Hai was the new tone of cinema. And I was like, I remember reading a review that said old wine, new bottle, and I was like suffering from that. And I remember I wasn't nominated in any award, and I used to really get disturbed. So I haven't really, and during Kabhi Alvida, the moral police were running after me. And then my name is Khan, there was some other police. She was like 80% rain ke chances hai. I said, to main kaise, what do I do, the rain dance to stop it? I can't now. I said, just like you, there will be sunshine. But I do know that this kind of love, Ranveer, to answer your question, is a first for me. Did you anticipate? I'm feeling like this is my debut film. And I was doing something, and it was just on speaker. He just, without me saying hello only, I'm just really happy. I don't know what to say. I'm just really happy. And I was imagining Karan sitting on his bed. And I had taken the day off from work, and I was lying down, and I was just looking and feeling happy. लूटो यार, तारीफ है, लूटो, हक बनता है यार. You delivered an Please entity. let ma'am ask the question. Please, I think it's the last one in the round. Ma'am, please, मुझे भी जानना है इस fascinating mind के बारे में. मैम एक सेकंड. एक सेकंड मैम. अरे कुर्सी नहीं लाया मैडम के लिए. Sir, did you anticipate this kind of intellectual discourse about gender dynamics, matriarchy versus patriarchy? Because you really just did, your intention was to deliver an entertainer, and that you did. It was lovely meeting you, Barkha, but I think now Thank you so much for your reportage. I really want to know it. Arey Baba, I never thought critics have never liked my movies. India want to know. India want to know, but I was in shock. I was like, अरे इसको भी अच्छी लगी, इनको भी अच्छी लगी. I was like, in the morning I told my marketing team, I said, don't send me any bad reviews. Nice. I don't want to send, just send me. So I was thinking, I was thinking that मेरा वो inbox भरेगा ही नहीं. But लगातार टैन मानो साहब का. I was like, इसको भी और तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगी थी मेरी. और राकेश रोशन जी से लेके अनुराग कश्यप जी तक. I was like, oh God, I'm so happy. मार्क्स और क्लास, क्या बात है? अरे जियो करण जौहर. Yes, ma'am. Please, the last question. Karan, this is for you. Oh, thank God. I really